A Baloch rights group has flagged concern over the recent floods in Balochistan and exposed the reality of so-called mega development projects in the region. A report. Members of the Baloch Executive Committee have raised concern over the damage suffered by people in Balochistan after the recent floods, especially the Gwadar region, which is portrayed as a beacon of development by Pakistan. BYC leader Mehrang Baloch said the stark reality is far grimmer in Gwadar, which is a central node in China-Pakistan economic corridor, and added the mega projects are serving as the principal catalysts exacerbating the flood. नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि गवादर में आने वाला सैलाब किसी भी सूरत कुदरती नहीं है, बल्कि नाकिस और गलत इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसियों का नतीजा है और इसके साथ साथ रियासती अदारों जैसा कि महकमे मौसमियात की गफलत का नतीजा है, जिन्होंने बारिश की पेशगी इतला यहाँ के शहरियों और माहीगीरों के सनत से वाबस्ता अफराद को नहीं दी थी। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हालत अपनी आंखों से देखी और यहाँ के शहरियों से जो मालूमात हासिल किए हैं, इससे हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि रियासत के लिए गवादर के शहरी नहीं, सिर्फ गवादर की समंदर अहमियत रखती है। Meanwhile, residents of Balochistan's Chaman town also said the weather was unusual for March, when winter is generally expected to be over. Heavy snow and rain continued to hit parts of Balochistan on Wednesday. A chief meteorologist said that such an intense weather spell could be attributed to some extent to climate change.